तो गाइस स्वागत है आपको टैप टू अनबॉक्स चैनल में। और आज हम लोग M4 का जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें फ़ैन साउंड ज़्यादा कर रहा था, तो आज उसका ही पार्ट्स आ गया है जो कि मदरबोर्ड और फ़ैन उसका हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हैं और फ़ैन को कैसे चेंज करेंगे। तो जल्दी से करते हैं बैक पैनल को ओपन। थोड़ा अच्छे तरीके से इसको ओपन करना पड़ता है और प्रोफेशनल लोग ही इसे ओपन करेंगे। और ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हो कि विंडोज़ लैपटॉप में आपको काफ़ी खुला खुला, मतलब उसमें वो कपड़े जैसा नहीं पहने हुए रहते, बट एप्पल के लैपटॉप में आपको ये जो बैक साइड में दिखेगा ये लगेगा कि कुछ टाइप का एक जगह है, एक जंक्शन टाइप का, जहाँ पे सारा कुछ अटैच होता है। बट विंडोज़ में ऐसा नहीं है। विंडोज़ को आप खोलोगे तो काफ़ी खाली मिलेगा, हर एक पोर्ट्स काफ़ी खाली मिलेगा। तो अभी हम लोग कर लिए हैं बैटरी जैक को रिमूव, सारे के सारे पार्ट्स को रिमूव करेंगे। इसलिए स्मूथ रहता है इसलिए। तो अभी सारे के सारे क्लिप निकल चुके हैं और हम लोग मदरबोर्ड को अब बाहर निकालेंगे।
ये रहा मदरबोर्ड। कुछ इस टाइप का मदरबोर्ड आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। तो ये है इसका रैम और स्टोरेज, जो कि सोल्डेड रहता है। और पीछे की साइड में अगर देखा जाए तो ये रहा इसका M4 का प्रोसेसर, और ये M4 का मदरबोर्ड है। दोनों फ़ैन अब हम लोग निकालेंगे इसमें से। तो ये रहा हमारा फ़ैन। और ये रहे उसके सारे पार्ट्स, जो कि अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। और ये जो है ये एप्पल्स के ओरिजिनल पार्ट्स हैं। ये फ़ैन है, और ये भी इसका फ़ैन है, और ये रहा इसका मदरबोर्ड टोटली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं असेंबली। और ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा राइट वाला है और कौन सा लेफ़्ट वाला फ़ैन है। तो ये रहा राइट साइड का फ़ैन, सॉरी ये लेफ़्ट साइड का था। और ये रहे उसके कुछ पार्ट्स। हम इसे सील करने वाले हैं ना। ये जो फ़ैन है ये राइट साइड का है। फ़ैन को लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, और इसका सारा सील भी हमने लगा दिया है, क्योंकि हम इसका भी सील लगाने वाला है। तो अब हम लोग असेंबली दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी ध्यान से आपको सारा का सारा स्क्रू लगाना होगा। अगर एक भी स्क्रू मिस हुआ तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं।
दोनों फ़ैन हमारा असेंबल हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग मदरबोर्ड को लगाने वाले हैं, जो कि इस तरह से आता है पैकिंग बॉक्स में, जो कि एप्पल की तरफ से प्रोडक्ट है। तो अब ये असेंबल होने वाला है। आपका रिमूव करो, क्या क्या करो करो सभी करो, कुछ भी नहीं। बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी क्लिप्स हैं वो आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप मदरबोर्ड रिप्लेस करवा रहे हो अपने M4 का। थोड़ी सी गलती और आपका 1 से 1.5 लाख रुपया फिर से दोबारा पानी में। तो हमारा मदरबोर्ड अब बैठ चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाला हैं, सारे के सारे पिन एक साथ अब हम लोग लगाएंगे एक एक करके। थोड़ा सा टाइट आ सको, थोड़ा सा टाइट होगा। नहीं ये डिस्प्ले कनेक्टर है ना, मदरबोर्ड रिप्लेस होने के बाद थोड़ा सा टाइट आएगा। अच्छा ऐसा क्या?
अलाइनमेंट के लिए होता है वो। अच्छा, और ये रहा नेटवर्क है ना ये। हाँ, लाइन नेटवर्क। तो इसमें विंडोज़ की तरह वाईफाई कार्ड दिया हुआ नहीं रहता ना। प्राइम मिल जाता है। देख लो भाई, अगर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम सारे के सारे इसको लगाने वाले हैं। तो आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें M4 का फ़ैन साउंड था, तो आपको पहले उसको जा कर के देखना होगा, और तभी हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर हम लोग रिप्लेस क्यों किए थे मदरबोर्ड और फ़ैन को।
तो ये लैपटॉप ऑलमोस्ट बन के अब तैयार हो चुका है। अब सारा का सारा असेंबली भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग इसको टर्न ऑन करेंगे, फिर इसके बाद डायग्नोस को रन करेंगे। सीरियल नंबर को चढ़ाना पड़ेगा दोबारा से क्योंकि मदरबोर्ड रिप्लेस हुआ है तो। और इसके बाद हम लोग लैपटॉप को टर्न ऑन करके दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारा का सारा। इन केस अगर फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो बैटरी का जैक भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ऑन करके देखते हैं क्या ऑन हो रहा है नहीं। तो लैपटॉप हमारा बन के हो चुका है रेडी। कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना। और आप देख सकते हो कि फैन साउंड ये धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। तो अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रन करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद इसका फैन साउंड कम हो जाएगा। रन कर रहा है, डायग्नोस कर रहे हैं और इस लैपटॉप से हम लोग डायग्नोस करेंगे।